Good morning, class. Today in BST, we will start the last chapter of this 7th unit, means the last chapter of directing. It is communication. Firstly, the meaning of communication. You know, this word communication is derived from the Latin word communis. The meaning of communis is common, means when two or more than two people want to exchange their shares, they want to share their ideas, thoughts, feelings with each other. How they will do this kind of things? They will share with their thoughts, ideas, feeling by using such communication art. So with the help of communication, you will be able to transfer your thoughts, ideas, feeling with another person and make him understand what you want to say, so that that person will reply you after that conversation. So this is about the meaning of communication, ki when we want to transfer, we want to share the ideas, feelings, thoughts with one another person and making him understand this thing, making him understand that what he want to say, the art of this process is called the communication. So this is about the meaning of communication. Now, as per this definition, communication is the process of passing information and understanding from one person to another. Now start with the first topic. It is called the features of communication. The first is two or more person. The first most important thing required for communication is at least two person will be there. A single individual cannot communicate with himself, so he need one another person to share his ideas, thoughts with that person. So that communication is possible when at least two or more than two persons will be there. One is the sender and the second one will be the receiver. Second is exchange of ideas. Obviously it is required that if you want to communicate something to any other person, something will be there definitely. Means आपके पास कोई idea, कोई बात, कोई feeling, कोई थिंग, कुछ भी ऐसा होना चाहिए जो आप उस पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हो. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. The understanding between the sender and the receiver definitely will be there, because without understanding you will not be able to understand what the sender want to say. So it is compulsory that the sender and receiver, they must have some mutual understanding with each other. Direct and indirect communication. You can communicate directly and indirectly with each other. Means you can communicate when you are communicating with face-to-face interaction. Means like if I am giving lecture in the classroom when you are there and I am also in the classroom, this is called face-to-face communication. Now which mechanism we are using nowadays, means we are making our videos and sending to you, this is indirect communication. Ki we are not face-to-face with each other, interaction is not there, but definitely I'm sending my thoughts, ideas, my ideas to you and you are receiving that same thoughts, ideas. So we are doing indirect communication, and when we are in the classroom we are doing direct communication. Next is continuous process. This communication is a continuous process in the organization, because at every moment the manager needs to guide, share thoughts, proceed any kind of information to the lowest level person to his subordinates. So it will be working as a continuous process. Use of words as well as symbol. If you want to communicate with any other person, definitely you need some words, or you may use some symbol if you don't want to use words. Symbols like if I want to say bye to any person, I can raise my hands and say ki bye. This will represent that I want to say bye to that person, or you can say goodbye to that person verbally. So you will use symbols as well as words for the communication level. It's not only that you can use your neck, you can use your shoulders. By using any kind of these things, you will represent your symbols. So this is words as well as symbols. Next we have in this chapter the communication process. Look at the picture. There are total 7 steps involved in the communication process. Start with the first one, sender. Sender is the person who wants to send his ideas, his thought to any other person. In the organization, subordinates and managers are there, and if a manager want to send any information to the subordinate, so who is the sender here? Manager is the sender here who want to send the information. Second is message. Message means the subject matter of communication, the thing which you want to say, the concept which you want to express, the feelings, your opinions, your advice which you want to share with your subordinate. They are the messages. Encoding.
एनकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल। मीन्स जो सेंडर, जो मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, उस थॉट को वो वर्ड्स में, सिंबल्स में, गेस्चर, पोस्चर से उसको एक मैसेज की सेंस में एनकोड करता है। नेक्स्ट वी हैव मीडिया। मीडिया इज विद द हेल्प ऑफ विच यू विल कम्युनिकेट विद द अनदर पर्सन, कि अब मैनेजर सबॉर्डिनेट्स के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करेगा, उनको लेटर सेंड करेगा, उनको ईमेल करेगा। मतलब आप कौन सा मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हो कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। दिस इज़ अबाउट द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। Then we have the receiver. Receiver is the person who has to receive the message, जिसको मैसेज एक्चुअली हम देना चाहते थे और जो रिसीव करना चाहता है। डिकोडिंग, अब सेंडर ने जिस आइडिया को अपनी सेंस में कन्वर्ट करके उस पर्सन को सेंड किया है, अब वो पर्सन अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको समझता है। दिस कॉल्ड इज दिस डिकोडिंग। लाइक अब मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग आई एम सेंडिंग द वीडियोस। नाउ यू विल वॉच द वीडियो। आप वीडियो को वॉच करोगे या वीडियो को वॉच करने के बाद आप उसको अपने लेवल के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हो। दिस इज कॉल्ड द डिकोडिंग। दे आर द एफर्ट्स मेड बाय द रिसीवर। लास्ट इज द फीडबैक। फीडबैक इज द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर कि दैट ही इज़ एबल टू, या ही एक्चुअली रिसीव द मैसेज, उसको वो मैसेज उस सेंस में समझ आ गया है जिस सेंस में वो समझाना चाह रहा था। दिस इज़ अबाउट द फीडबैक। सो देयर आर टोटल 7 steps involved in the process of communication. Next we have the types of communication. There are 2 kinds of communication. One is formal, second is informal. So I'll start with the first one, formal. Formal communication refers to interchange of information officially. Means when you are in the organization and here you will pass only the official message on conversation is only official, related to the problems of the organization, related to the improvement for the organization. Means जहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली ही पास होती है। दिस इज़ अबाउट द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन, कि जिस तरह से जो टॉप लेवल है, अगर सुबॉर्डिनेट्स तक कोई भी मैसेज कन्वे करना चाहती है तो वो रिटन सेंस में फॉर्मली, ऑफिशियली जो मैसेजेस सेंड करती है रिटन सेंस में, वो आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। सो दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन। वी आर यूजिंग अ प्रॉपर चैनल। लाइक अगर हमें स्कूल की तरफ से कोई भी मैसेज मिलता है आप लोगों को पास आउट करने के लिए, द मैनेजमेंट विल नॉट पास द मैसेज डायरेक्टली टू यू, they will convey the message to us, then we will convey the message to you. So we are using a proper level या proper chain of communication. So this is called the formal. Some features, written and oral. This communication can be in written as well as in oral sense. तो आपका oral होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम अराइज होती है क्योंकि मैसेज डाइवर्ट या मैन्यूपुलेट हो सकता है oral में, बट रिटन सेंस में एग्जैक्टली सेम फॉर्म में मैसेज कन्वे होता है। फॉर्मल रिलेशंस, हेयर द पर्सन, जो सेंडर, रिसीवर है, एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर है, सबके बीच में फॉर्मल रिलेशन होते हैं। वी हैव ए प्रेस्क्राइब्ड पाथ। मीन्स जैसे अभी मैंने बताया, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट से प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल से टीचर्स के पास, टीचर से आपके पास मैसेज कन्वे होगा। सेम एज इट इज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वर्कर्स को, टॉप मैनेजमेंट को कोई मैसेज कन्वे करना है, वर्कर्स फॉरमैन को कन्वे करेंगे, the foreman will convey the same message to the managers. This is a prescribed path. Next we have organizational message. Only the messages related to the organization will be passed in this kind of communication. Deliberate effort. Definitely efforts किए जाते हैं इसमें, बिना efforts किए मैसेज यहाँ पर communicate नहीं होते या send नहीं होते, because हमें organization के object को achieve करना है। Next kind of communication is informal communication. Informal communication refer to interchange of information unofficially. Here you will जैसे हम इनफॉर्मल हमने ऑर्गेनाइजेशन किया था कि आप फ्री आवर्स में बैठकर गैदरिंग करते हैं, आप डिस्कशंस करते हैं, वो आइडियाज़, थॉट डिस्कशन आपके पर्सनल इशू से भी हो सकते हैं, आपके ऑफिशियल इशू से भी हो सकते हैं। मीन्स देयर इज़ नो प्रॉपर फॉर्मल चैनल हेयर, there is no official relation here. You are friends, you are sharing your ideas, thoughts with your friends related to your organization or maybe अपने senior के बारे में कोई भी बात। means you are free to talk about anything in this kind of communication. This is called informal communication. Here so many people are seated here and they are talking in a group. That's why it is also known as grapevine communication. grapevine like grapes, cluster of grapes. ग्रेप्स मतलब जैसे आपने ग्रेप्स देखे हैं, वो एक ही गुच्छे से बहुत सारे अटैच होते हैं, बंधे हुए होते हैं। दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज सिमिलर टू ग्रेप्स, कि जिस तरह से ग्रेप्स
एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उसी तरह से इस कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ आपस में अटैच होकर they are free to talk about anything in this kind of communication. Here is no kind of senior, junior, subordinate, superior, manager. This kind of thing is not there in this kind of communication. Some features: formation through social relation. यहाँ पर जो आपके रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं वो सोशल होते हैं. यहाँ पर ऐसे जैसे मैंने बताया, किसी का कोई सीनियर कोई जूनियर कुछ नहीं होता. 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस काइंड ऑफ, आप ऑफिशियली एज वेल एज आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हो. इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड पाथ नहीं होता, ये एक जिगजैग की फॉर्म में होता है. मीन्स कोई भी पर्सन किसी के साथ भी फ्रीली टॉक कर सकता है. पॉसिबिलिटी ऑफ र्यूमर्स, इस काइंड के कम्युनिकेशन में र्यूमर्स फैलने के, र्यूमर्स मीन्स अफवाहें फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. अफवाह जैसे बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, उस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है. क्विक रिले, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है बहुत स्पीडली बहुत फास्टली स्प्रेड होती है, बिकॉज सो मेनी पीपल आर अटैच्ड विद दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. तो एक ही सेकेंड में इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों में सर्कुलेट हो जाती है. Next topic is barriers to effective communication. As per the new guidelines of CBSE, a revised syllabus of CBSE, this section is not in our syllabus now. So only this little bit topic is there in this. Next we have different kinds of barriers, semantic, psychological. They are not the part of your syllabus now. After this we have the measure. This is also not the part of your syllabus. Please, जो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि ये सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, साइड बाय साइड जैसे मैंने क्रॉस किया हुआ है, टिक किया हुआ है, आप इसको क्रॉस करते रहिए ताकि जब हम रिवीजन करेंगे एट दैट टाइम आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि मैम हमें क्या करना है और क्या स्किप करना है. तो इसको साइड बाय साइड आप कट करते रहिए सो दैट आपको कंफर्टेबल रहे इन फ्यूचर व्हेन वी आर डूइंग द रिवीजन. So that's all about this chapter as well as this unit. So I hope ये unit आपको clear हो गई होगी. After that I will start the next unit so that you will be able to complete the 8th unit also. Up to that, take care and goodbye.